Dear students of class 12th, Assalamu alaikum. So today's topic is alternating current generator, which is abbreviated as AC generator. A bit lengthy question, so I will not write the construction and the principle. So AC generator is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy. So a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy, that is known as alternating current generator or AC generator. It is working principle is remember it, working principle of AC generator is EMI, that is electromagnetic induction. In electromagnetic induction, we know when coil placed in magnetic field rotates, then what happens? Flux changes. When flux changes, then EMF is produced. So what is the principle of AC generator? Electromagnetic induction. When a coil placed in the magnetic field rotates, वहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाता है, उसी फ्लक्स चेंज से EMF भी प्रोड्यूस हो जाता है. अब मसला ये है, इस कॉइल को रोटेट कैसे कर लेंगे? तो उसकी रोटेशन के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे कि आप जानते हो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट में हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं इन ऑर्डर टू रोटेट द आर्मेचर और द कॉइल so that the flux changes, right? So the main parts of the AC generator are: number one is armature. Armature आपके पास ये है rectangular coil ABCD. It is insulated, made of copper, in the shape of a rectangle or rectangular shape, having large number of turns, or we can say n number of turns. फिर से सुनिए, रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, कॉपर ABCD कॉपर की बनी होती है, इंसुलेटेड भी होती है, एंड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. इस पोर्शन को, इस कॉइल को हम कहते हैं आर्मेचर. सो व्हाट इज आर्मेचर? नथिंग, सिंपली अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD made of copper which is insulated, having large number of turns. This is placed in the magnetic field. So this is known as armature, first part. Second part आपका है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या जिसे हम फील्ड मैग्नेट कहते हैं. फील्ड मैग्नेट या तो परमानेंट मैग्नेट होता है, या ज़्यादातर तो इस्तेमाल हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट हैविंग पोल्स नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसको हम कहते, जिसमें कॉइल प्लेस्ड होती है या आर्मेचर प्लेस्ड होता है, इसको हम कहते हैं फील्ड मैग्नेट. फील्ड मैग्नेट के बाद इसका तीसरा पॉइंट है
slip rings, slip rings, ये दो मेटेलिक रिंग्स होती हैं R1 और R2, which are connected to the ends of the coil. ये एक एंड है जो R1 के साथ कनेक्टेड है और ये दूसरा एंड है which is connected with the R2. These are metallic rings, hollow metallic rings to which the ends of the coil are connected. And one thing more, ये रिंग्स भी रोटेट कर लेती हैं with the coil or with the armature. फोर्थ पार्ट इसका है, there are two brushes B1 and B2 brushes, B1 B2, यहाँ पे रिंग्स R1 और 2, ये है आर्मेचर आपका ABCD, दो ब्रशेस, एक B1 है एक B2 है, which are attached, place it in contact with the R1 and R2, which these two are fixed, graphite brushes through which the current goes या flows through the load. इन्हीं ब्रशेस के थ्रू, ग्रेफाइट के जनरली बने होते हैं, इन्हीं ब्रशेस के थ्रू इस लोड में करंट जाती है. लोड कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट मीन्स ए लोड. So these are known as graphite brushes, or simply we can say two carbon brushes B1 and B2, which are placed in close contact with the R1 and R2 and are fixed, through which the current flows to the load, right? And this is complete construction of the AC generator. जैसे हम ये कहेंगे, this is axis of the coil, और यहाँ पे इसका टर्बाइन होगा. यहाँ पे हमें मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है in order to rotate it, right? So one part is armature, second is field magnet, third is slip rings, and fourth is graphite brushes. Now, how it works and how EMF is produced. Quite simple. जैसे कि हम लेंगे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. The direction of the magnetic field is from north to south. And when this coil rotates in the field, at one time the plane of the coil is perpendicular to the field, and when it rotates the plane will become parallel to the field. Then it will become again perpendicular to the field, and then it will become again parallel to the field. Is it clear to you? North and south pole. This is the direction of the magnetic field. When the coil is placed in the field. Now this is the plane of the coil. This is the plane of the coil. This plane is the parallel to the field. When it rotates, it will become perpendicular to the field. When it further rotates, it will become parallel to the field. When it will rotate further, it will become perpendicular to the field. And we know when the plane is perpendicular to the field, flux is maximum. When it is parallel to the field, then there is no flux. So due to the rotation, flux changes. When flux changes, there is induced EMF in the coil, right? So हम यहाँ पे कहेंगे when coil rotates, flux through it changes, and an induced EMF is produced in it, right beta? So when coil rotates,
फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इसकी डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द डायरेक्शन एज इट इज अपोजिट टू द कॉज। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, जिस रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में आपको क्या करना होगा, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, दिस इज forefinger, central finger, and this is motion of the coil। ये मोशन को रिप्रेजेंट कर लेता है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर लेता है, एंड दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। फोर फिंगर फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, एंड थंब गिव्स द मोशन, राइट। तो हम वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन कॉइल रोटेट्स, फ्लक्स थ्रू इट चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट। तो डायरेक्शन हम कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। 3 फिंगर्स को स्ट्रेच कर लीजिए, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर। ये दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। तो हम यहाँ पे लेट कंसिडर कर लेंगे, लेट कॉइल और रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, right? When it rotates in anti-clockwise direction at any instant of time, this is its position. Anti-clockwise direction, and this is the position of the coil. Now when there is change of flux, there is induced EMF and there is current, induced current. How we will find the direction of the current? ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका ए बी पोर्शन, ए बी साइड जो होगा ये अब मूव करेगा अपवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज की मैं बात करता हूँ। अब सी डी की बात करेंगे, सी डी की बात करेंगे तो सी डी साइड विल मूव डाउनवर्ड्स, यानी आप इस कॉइल को मान लीजिए ये आपका सी डी साइड है, ये ए बी साइड है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा तो सी डी डाउनवर्ड्स और ए बी अपवर्ड्स, ऐसा होगा। उसके बाद इस तरह होगा, राइट। तो हम ए बी की बात करेंगे, इसमें करंट किस डायरेक्शन में होगी? चलिए राइट हैंड को यूज कर लेंगे। ये फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में है, ए बी साइड अपवर्ड्स है, थंब, and direction of current is from A to B, this is central finger। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, यहां से लाइक दिस। तो जब ये करंट B1 में पहुंच जाएगी तो ये फ्लो होगी इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम B1 to B2। सो AB साइड अपवर्ड्स, CD साइड डाउनवर्ड्स, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी इन द कॉइल? डायरेक्शन होगी A B C D, राइट। और इन द लोड क्या होगी? फ्रॉम B1 to B2। इन द लोड फ्रॉम B1 to B2, राइट। चलिए ठीक है। नाउ
when it completes half of the rotation. जब half of rotation complete होगा, AB साइड ये होगा और ये होगा इसका CD साइड. तो यहाँ पे आपका AB डाउनवर्ड्स मूव कर लेगा और CD अपवर्ड्स मूव कर लेगा. जब CD अपवर्ड्स मूव कर लेगा, अपवर्ड्स ये भी था, अपवर्ड्स ये भी है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट आप क्या होगी, फ्रॉम D टू C. चलो राइट हैंड को यूज कर लेंगे. इसकी मोशन अपवर्ड्स, फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट फ्रॉम D टू C होगा. तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो यहाँ पे करंट पहुंच जाती है पहले B2 में और उसके बाद यहाँ से चली जाती है B1 में. सो व्हाट विल हैपन एंड देन आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, CD side it will move upwards और जो आपका AB side होगा it will move downwards, right? So अब डायरेक्शन होगी DCBA, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर क्या होगी, DCBA, राइट? तो इन द एक्सटर्नल सर्किट क्या होगा, फ्रॉम B2 टू B1, B2 टू B1. So the process repeats. After every half rotation, the direction of the current changes. एक हाफ रोटेशन होगा तो B1 से B2 करंट फ्लो हो जाएगी. दूसरा हाफ रोटेशन होगा तो करंट फ्लो होगी फ्रॉम B2 टू B1. So it means that the direction of the current changes continuously after every half rotation. तो इस तरह के करंट को हम कहते हैं alternating current. For one particular time it is in one direction and it repeats, it changes its direction after every regular intervals of time, every half rotation, right? That is why the generator is known as alternating current generator. So उम्मीद है आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी. हो सकता है कभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो या कोई व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, राइट? नाउ व्हाट इज थ्योरी एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द alternating current. Now we know when the coil rotates, let omega is equal to, it is angular velocity, angular velocity. So we know angular velocity omega is equal to theta divided by t, that is angular displacement divided by time, and we can write it as theta is equal to omega t. This is the position where theta is the angle between normal to the coil and the direction of the magnetic field at any instant of time when it is tilted. ना perpendicular है, ना parallel है, ना perpendicular है, at any angle, right? So in this case, the component of the magnetic field which is perpendicular to the coil, that is B cos theta. That is B cos theta. Now, field perpendicular to the coil is equal to B cos theta. A is equal to area of the coil. Flux linked is equal to B cos theta into A, where A is the area of the coil. So we can write it as AB cos of theta. If the coil has n turns, if n is equal to number of turns,
then phi is equal to n times a b cos of थीटा के बदले में हम ओमेगा टी भी डाल सकते हैं, राइट। Now we have to find the expression for the induced current, induced current या alternating current or alternating EMF. So according to the Faraday's second law, E is equal to minus d phi upon dt, So E is equal to minus d by dt of, it is NAB cos of omega t, which is equal to minus NAB cos की डिफरेंशिएशन कीजिए, that will be minus sin omega t, और omega t की डिफरेंशिएशन कीजिए, that will be omega. So you will get here minus and minus plus E is equal to N A B omega sin of omega t, right? So E is equal to E maximum, E naught, that is maximum, when sin of omega t is equal to 1. So we can write here E naught is equal to, अगर ये 1 होगा तो ये E naught होगा, then NAB omega, right? Therefore our expression will be E is equal to E naught sin of omega t. This is the expression for the alternating EMF. Alternating EMF will send the current in the coil or in the load. So we can write I is equal to E divided by R, where R is the resistance of the load. So we will get here E naught sin of omega t divided by R. E naught divided by R, that is potential difference divided by resistance, वो current होती है. So we will get I is equal to I0 sin of omega t. So this gives the expression for the alternating current, और ये है alternating EMF, and this is alternating current, right? So what is it as graphical representation, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे. Graphical representation, how to represent it graphically, alternating current और alternating EMF, एक ही ग्राफ दोनों का होगा. चलो हम यहाँ पे लेंगे पहले EMF का. E is equal to E0 sin of omega t. जाहिर सी बात है, पहला पॉइंट आप लीजिए, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर. इस पे डाल दीजिए नॉर्मल आप, तो एंगल बी और नॉर्मल के दरमियान 0 होगा, लेकिन फ्लक्स मैक्सिमम होगा. सो E इज इक्वल टू E नॉट, सो omega t is equal to 0. E is equal to E naught sin of omega t. E is equal to E naught sin of omega t के बदले में हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0. sin 0 का वैल्यू 0 है. You will get here E is equal to 0. Number 1. Number 2,
if omega t is equal to 90, omega t is equal to pi by 2, e is equal to e0, sine of pi by 2 is equal to e naught. That is maximum. So when plane of the coil, यहाँ ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो गया होगा. ओमेगा टी 0 के बराबर है. यहाँ पे हम नॉर्मल की जो मैंने दिखाया वो नॉर्मल की बात मैंने दिखाई, तो आप कंफ्यूज हुए होंगे. दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल. व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा टी 0 के बराबर होगा, साइन 0 0 होगा. सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ. जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा, E is equal to E0 sin of pi by 2 sin 90, sin 91 के बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू E नॉट, मैक्सिमम होगा. तो इसका ग्राफ भी हम यहाँ पे डाल देंगे. पहला पॉइंट तो ओमेगा टी, यहाँ से हम ओमेगा टी को प्लॉट कर लेंगे या टी को प्लॉट कर लेंगे. ये 0 है, तो पहला पॉइंट 0 बन जाता है. दूसरा पॉइंट जब पाई बाई 2 होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा. तो ये ग्राफ इस तरह का बन जाएगा यहाँ. तीसरा पॉइंट आपका होगा व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, देन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ पाई. साइन पाई 0 के बराबर होगा तो अगेन 0. सो फ्रॉम दिस पाई दिस इज द alternating current, so it decreases and it become a 0. Now fourth point आपका होगा when omega t is equal to 3 pi by 2. 3 pi by 2 means E is equal to E naught sine of 3 pi divided by 2. थ्री पाई बाई 2 आपका होगा -1 के बराबर. सो यू विल गेट हियर माइनस ई नॉट. तो हम पाई बाई 2 पाई दिस 3 पाई बाई 2, तो नीचे माइनस आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका. एंड इन फिफ्थ इट इज ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई. 2 पाई e is equal to e naught sine of 2 pi sin 2 pi भी आपका 0 होगा, that is equal to 0. So at the 2 pi we will get here, this is 2 pi e is equal to 0. So this is alternating, that is sine wave. It is known as sine wave. Similar is the case if we plot a graph of the current. ये T लेंगे, ये I लेंगे, यहाँ से हमने EMF लिया था, तो इसका ग्राफ भी इस तरह का होगा. So this is known as, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं. T को प्लॉट करेंगे, ओमेगा T को यहाँ पे प्लॉट किया है, यहाँ पे T को प्लॉट करेंगे तो ये 0 है, ये T डिवाइडेड बाई 4 होगा, ये T डिवाइडेड बाई 2 होगा, और ये T डिवाइडेड बाई 2, T डिवाइडेड बाई 3 होगा, ये T होगा. राइट. सो दिस इज I is equal to I0 sine of omega t, and this is equal, E is equal to E0 sine of omega t. So this gives the expression for the alternating EMF and alternating currents. तो जब इस तरह की करंट को या इस तरह के EMF को हम अप्लाई कर लेते हैं in the circuits, they are known as alternating current circuits, and they will be discussed in the next lectures. Okay, thank you.